All right. Welcome everyone. Welcome to this episode of Nifty Ki Baat. Right now it's 11:45, and as you can see on the screen, markets opened thoda gap down, but then since then it has been a बिल्कुल recovery mode में markets लगे हुए हैं. So at this point, Jay Raj, what is the outlook? What do you think about the markets? Hi, a very good morning to one and all. Uh, I think that if I look at the data, Vishu, what the data indicates here, and which is what I and Raj were discussing as well today morning, is that as looking at the last 4 or 5 years, Vishu, what we have observed is that Nifty has closed negative for 4 weeks, no doubt, or 5 weeks, no doubt. But beyond 5 weeks, it has not extended its gains for most of the times. By saying that is what we are seeing is Nifty can fall for five negative close or give five negative close. But after doing that, it generally takes a pause. I mean, either it goes sideways or it bounces back. Okay. Now this is the fifth week. So let me just show you on the chart weekly degree. So this is the weekly degree issue. I hope this is visible. Yes, it is. 1, 2, 3, 4, 5, and this is the fifth week. And last week close is somewhere around 24,842. So for this week to be positive, it has to close. You can round it out to 24,850. Either Nifty closes above 850, or else if that acts as a hurdle for this week to be closing positive, then it may close negative. Then what will happen is it might probably not fall. Uh, uh, just a second. Below its previous swing lows where it managed to hold down even during Iran and Israel war, including America. So that lows were held. So probably what can happen is if it does not close about 24,850, if it falls, I mean, considering the volatility is low, I mean, IVs are low, and if it goes up, then up and down movement will be there. So even if it falls, it will take a support here, and then again next week it will bounce back. So all I want to say, Vishu, is that generally after 5 weeks of fall consecutive, there is a chance of a pause or a bounce. All right. Now, if we want to compare the same with the broader markets, actually this is not the correct one. Just a minute. If you look at the broader markets, Vishu, probably Nifty mid cap and Nifty small cap index, they have come to their previous lows. Uh, 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 I will show that as well. So by that I mean to say that looking at the broader markets, also it seems that they are near the supports and there can be a bounce. Hence we are seeing this bounce. Raj will even speak more about it. That FII index figures are really quite oversold as far as their short positions is concerned. And today we have this what do you say expiry as well, monthly expiry. So we really need to see that how much is getting rolled over, or if it does happen entirely, then that increases the short covering maybe in the next week or in the next series, or whether the short covering happens today. So that will come to know more about it. But that is one thing, that yes, there is a lot of short buildup there on the index futures, and there can be some bounce back. And the IVs are less, and this weekly 5 negative close. So combining all of this, Vishu, the strategy which we have thought as of now is this: that one can buy 24,900 call of 7th August. Okay, this is costing 129 rupees approximately. You can buy 24,900 call and then sell 25,100 call at 60.
At 60, you can sell 25,100 call, and you can sell 25,300 call as well at 25, 26. Now, what is the costing of it? What is the costing of it? 129 पे आपने खरीदा 24,900 call, right? We should. So this is this strategy when you buy one call and sell two calls of different strikes. It's called bull call ladder. It's called bull call ladder. So we bought 24,900 call at 129. We sold 24,100 call at 60. So what is the outflow? 69. To reduce our risk even more from here on, at 26 we are selling 25,300 call as well. Our costing is what we should 43 points only. Getting it? Okay. So I mean, on a safer side, I would say that beyond 25,300, one should be either exiting, because the loss becomes unlimited after a certain point. That's not the exact figure, but I'm just saying. At 25,300 or maybe at 25,100, your profit will be maximum. Okay. Maximum to what extent? 157 points. So if you see risk reward issue, 157 divided by 43 is around 1:3.65, which is quite a favorable risk reward. 25 100 में बंद हो गया, considering it was it has overall trend still remains negative or sideways. So if it has fallen so much, if it bounces back this much up to 25,100 or something, the risk reward is quite favorable. So you create this kind of a strategy wherein your outlook is of a limited upside. Right, and since IVs are less, so we think that that can be again a volatility going forward. So even if it bounces back, it might again come down, and then so you are just doing this for a weekly expiry, not for a monthly expiry. Hence, your risk reward is favorable. So this is what issue I wanted to first convey. We'll discuss more, but giving you this weekly scenario, the IV scenario, FINS short figure, I think this is the ideal strategy which we thought of as of now. Based on the risk reward. Yeah, over to you and Raj. Right. Raj, आपका क्या व्यू बन रहा है? विशु, व्यू के दो प्रकार हैं. पहला तो ये कि हम अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2-2.5 घंटे में क्या होगा, और दूसरा ये कि ब्रॉडर व्यू हमारा क्या बन रहा है. तो व्हेन इट कम्स टू ब्रॉडर व्यू ऑफ व्हाट आई बिलीव दैट वोलेटिलिटी इजंट ओवर. तो हम लोगों ने बात भी की थी कि हम लोग एक्सपायरी वीक में वी विल सी सम डायरेक्शनल मूव, and we are witnessing that. Okay, not up to the same extent I would have liked कि मुझे लग रहा था 2 से 3% का निफ्टी का मूव आएगा, वो शायद 1.5% के आसपास सिमट गया. But there are a couple of things which right now we don't have that data. By the end of the day we'll get to know कि कैसा रोल ओवर हो रहा है, FIs ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस काटी हैं या पूरी पूरी रोल करके जा रहे हैं. एंड ऑब्वियसली जो अनसर्टेनिटी चल रही है टैरिफ को लेकर, that is also going to play a crucial So what we believe that, okay, and Jay has mentioned one very crucial point that in last 5 to 6 years we haven't seen Nifty closing weekly negative for a consecutive 6 weeks. So in case even tomorrow also we will not be able to recover beyond 850, something like that, but the next week is likely to be a bit of positive. So in that scenario, perhaps a bull ladder sort of strategy like Jay has suggested that can be looked at. And obviously any sort of trend reversal that we can expect only beyond 25,200 to 50 odd levels, and until unless those levels are not surpassed, I don't think we should be positionally bullish in the market on an immediate basis. Now coming today, see last expiry, we have seen a move of 350 points in Nifty. That day we have seen a humongous short covering also. By the end of the day, those shorts were FIs just left their shorts and covered their positions. And as of now, chances of becoming happening the same thing, as of now, I believe that is remote. That may not happen, but never say never in the market. And perhaps if we are moving beyond 850, then perhaps 850 or 870, Jay will tell you the exact levels. But beyond certain point, perhaps we might see extension of this current move. अभी यहाँ पर लगकर मुझे ऐसा लग रहा है we might revisit 750 sort of level, and from there there would be a more of a consolidation.
बट जब हम लोग अगले हफ्ते की बात कर रहे हैं तो मुझे डाउन साइड इमीडिएट बेसिस पे कम लग रही है। जो मुझे कंसर्न है, पिछले 3-4 हफ्ते से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि आईवी कम है, आईवी कम है, और मार्केट में डिक्लाइन भी आ गया, सब कुछ हो गया, बट आईवी में उस तरीके का हमें इंच अप देखने को नहीं मिला। वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द आईवी इज टू लो अराउंड करंट लेवल्स ओनली 11.8, और आप देखोगे कि आपके पांचों वीक निफ्टी हैज बीन नेगेटिव। सो दैट इज समथिंग विच इज स्टिल bothering me कि भाई यहाँ पर भी still be I'm not that comfortable in taking a positional long for something for 25,500 or let's say 25,700 odd levels. That will decide only beyond 25,200 or 300 odd levels. So till then, just for a marginal bounce back, like Jay has suggested, we can form a later type of strategy. अब सेक्टर्स में आते हैं तो वन कैन सी कि हाँ भाई आईटी में तो क्लियरली बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो उसको तो मैं हटा ही देता हूँ कि वहां पर मुझे बहुत बड़ा एक डेड कैट बाउंस ही आ सकता है वहां पर, और वहां पर शॉर्ट सबसे ज्यादा है। अगर मार्केट में कई शॉर्ट्स हैं जहां पर बिल्कुल दिख रहा है शॉर्ट, दैट इज आईटी। तो वेदर इट्स टीसीएस और इन्फी, लेट्स टॉक अबाउट जस्ट द हैवीवेट्स, वहां पर सिग्निफिकेंट शॉर्ट पोजीशंस हैं, तो देखते हैं कि उसमें कितनी रोल होती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन इन द बैंकिंग स्पेस, तो आपके टॉप 2 स्टॉक्स को छोड़कर अगर आप रेस्ट ऑफ द बैंकिंग स्पेक्ट्रम देख रहे हैं और इवन ओवरऑल फाइनेंशियल स्पेक्ट्रम भी देख रहे हैं, तो वी आर विटनेसिंग अ सिग्निफिकेंट वीकनेस ओवर देयर। सो फॉर मी इवन द बैंकिंग इज समथिंग वेयर विच इज लिंगरिंग अराउंड वेरी क्रूशियल लेवल्स। हम लोग तो 57,200 की बात कर रहे थे कि दोबारा से अगर यहाँ पर आ जाता तो दैट मीन्स कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, एंड वी हैव ब्रोकन दोस लेवल्स। So until this now, Bank Nifty is not moving beyond 56,500 sort of level. I would be amazed कि मैं उसमें जो है ज्यादा पॉजिटिव हो पाऊं। Bottom fishing, still I would not recommend anybody to go for the bottom fishing in any of the BFSI names. Yeah. Right. And strategy wise, Raj? See, for the positional strategy, what I believe Jay has given is makes perfect sense, because he's talking about not something which is for a month. He's talking about just a week, and we haven't seen Nifty closing negative for the 6 consecutive weeks. So whether somebody is making it right away or someone is making tomorrow by the end of the day कि देख ले भाई कि निफ्टी जो है वीकली बेसिस में कहीं ऐसा ना हो कि कल 850 हो जाए और फिर भाई 5वां हफ्ता निगेटिव नहीं हुआ। तो अगर कल हम 850 के नीचे ही बंद हो रहे हैं कल भी, तो परहैप्स व्हाट जय हैज सजेस्टेड कि आप जो है एक कॉल ऑप्शन लेकर ऊपर के 2 कॉल ऑप्शन बेच दें, चाहे वो रेशियो बनाए या लैडर बनाए, दैट विल मेक मोर सेंस देन taking a directional bet on the higher side. That is the one. From the today's perspective, I still believe there is a lot of volatility is left. आज मंथली एक्सपायरी ऐसे शांति से नहीं होने वाली, एंड जय का एक है कि जय का चाहे कुछ हो पैसा बना के निकलता है, तो his pivot point would be somewhere around 750. So even I want Nifty to move towards 750 or 700 odd levels, उसके आसपास आ जाएगा. So that would be better thing for me to do. On higher side, until unless 850, 870 is not surpassing, I'm not going long in the market. That's for today. Right. Acha, what do you think about the volatility right now? वॉलेटिलिटी स्टिल लो, मतलब आप याद करो 3 हफ्ते पहले हम जब बात कर रहे थे कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, वॉलेटिलिटी तो नहीं बढ़ी, बट वॉलेटिलिटी बढ़ने से जो मार्केट में होना चाहिए था वो हो गया. तो अब देखिए क्या है कि अभी एफआईएस ने पिछले 1 हफ्ते में, उसके पहले ने पिछले 1 हफ्ते में दे हैव बिकम अ बिट एग्रेसिव. टुडे माइट बी बिकॉज ऑफ द सेटलमेंट वी आर विटनेसिंग a bit of covering or something like that, you can say कि नीचे से रिकवर आए, बट द अनसर्टेनिटी स्टिल प्रिवेल्स. और अगर ये शॉर्ट पोजीशंस रोल हो रही हैं अगले हफ्ते में, तो समवेयर डाउन इन अगस्त, आई बिलीव, even we believe, even Jay is also expecting the same thing, कि we will see further inch up in volatility. और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई कि वॉलेटिलिटी कम होने से कि एटीएम स्ट्रैडल जो है ना, उसके प्राइस इतने कम है कि आपका एटीएम स्ट्रैडल के प्राइस नहीं चेंज होते हैं, आपका एटीएम चेंज हो जाता है. तो अगर 24,700 किसी ने शॉर्ट किया था सुबह और अभी वो 24,800 सेम प्राइसेस अवेलेबल, तो 700 वाले का लॉस हो जाता है. लेकिन एटीएम प्राइसेस में क्योंकि आईवी इतनी कम है कि आपका प्राइस इरोजन बहुत मुश्किल हो जाता है. तो आई थिंक आईवी अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ है. इट में मतलब मे इंच अप टुवर्ड्स 13 लेवल्स बाय द मिड ऑफ द अगस्त सीरीज.
Right. Jay, anything to add? No, I am absolutely resonate with Raj. And see, I'll tell you, Vishu, one thing that in this month, particularly when we were discussing about the IVs, second or third week when they were down, and finally in the previous week we did see it bouncing back. Uh, the IVP and IVR data, which we were discussing about, had fallen to zero point 0.4. I mean, IV percentile and 2.33 IV rank in Nifty, to 0.4, 0.4 in Bank Nifty, did bounced to 20s levels. 20 levels तक आया था both Nifty and Bank Nifty IV जो 3 दिन बढ़ी ना विशु उसमें. So IVR IVP data did bounce for 3 days, and within that we saw Nifty falling. So 3 दिन में वो हुआ और Nifty गिरा भी. गिरने के बाद we are now at a stage where this scenario of 5 weeks is what we are discussing. You know, कि उसके बाद शायद पॉज होता है. सो अगेन आईवी में कूल ऑफ, बट प्रोबब्ली इफ आईवी में कूल ऑफ तो उसका मतलब क्या होगा विष्णु कि फॉल आया, आईवी कूल ऑफ हुआ तो आपका साइडवेज टू बाउंस आया, एंड देन जब वापस आईवी में बाउंस आया देन यू सी द नेक्स्ट लेग प्रोबब्ली डाउन, or maybe see we said that 70% it is down, so last time it happened down. So again reiterating the same thing that 70% can be down, so again after this pause or a bounce it can again come down. 30% has happened that it went strong up, but then you'll get that directional. So the directional move is again yet to come. We did get a directional move for 3 days. We'll again get it after this pause or a bounce. Again, that directional move down or up, but we'll get that directional. So that is what I want to say about I is that it's a pause scenario, or it might just pause again for a couple of days, and then again it might spike up. With all this, Vishu, even that is what even I and Raj were discussing, that with all the scenarios which we have discussed, one level of 24,500, below which I would like to say that probably that bounce may not come, and you can see something new happening this time probably, that वो और कंटिन्यू हो जाए नीचे की तरफ. ये जो लेवल है ना विशु, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये जो लेवल है ना पूरा, अब इसके नीचे चले जाता है ना, then I would not be what do you say, too inclined or too much biased towards my view of कि नहीं फिर bounce आना ही चाहिए, 5 week हो गया. There has to be some point where you think that boss I have got wrong, so you have to throw in your towel and you have to surrender and then wait and watch what happens next, right? That is called a stop loss. So for me, for that bounce, that this could be a stop loss. 24,000 what is it, 477, 450 पकड़ लो, round figure विशु, based on the strike price of Nifty, 450 पकड़ लो. Below this, if it goes, I might have to revisit my view and rethink, or maybe we have to revisit our view and rethink कि क्या अब यहाँ से वो bounce वाली बात जो हम कर रहे थे कि pause वाली बात, तो वो आएगी कि नहीं. This time around you might get for the first time in last 4-5 years the 6th negative weekly close, and which is more like sharp and very deep, which can get by to the next swing levels of say 23,950 or maybe 24,000, and फिर बाद में एक नया कभी ना कभी कुछ नया रिकॉर्ड बनता है. हम क्रिकेट में देखे कि कोई भी स्पोर्ट्स में देखे, राइट, तो बाजार में भी बन सकता है, ऐसा नहीं है. ये तो क्या स्टैटिस्टिक्स के ऊपर हम एक जज करते हैं, ऑड्स फेवर में है कि नहीं है हमारे, but then it can never be 100%. So viewers are level for a reversal or maybe negating a view would be 24,450, right विशु? वो एक लेवल है. बाकी तो वोलेटिलिटी, मतलब वो एक लेवल है जिसके बाद वोलेटिलिटी शायद गिरे नहीं, जोर से बढ़ जाए, अदरवाइज वो पॉज होके वापस बाउंस के बाद बढ़ेगी. इज व्हाट आई वांटेड टू एक्चुअली कन्वे टू यू रिगार्डिंग वोलेटिलिटी, जिसमें मैंने ये सब आपके साथ लेवल्स की बात भी की. या राइट, एब्सोल्युटली. तो
ब्रॉडली बात करें तो आई थिंक मीनवाइल जितनी देर में हम बात कर रहे थे उसमें भी मार्केट कुछ तो वापस टम्बल डाउन हुआ। आई थिंक 750 लेवल्स, राज अभी आप जस्ट बोल रहे थे 770 तक तो आ ही गए वो। राज आप म्यूट पे हैं। हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि वो यहाँ पर आएगा, मैंने बोला जय का लेवल आ जाता है तो तो जय पैसा बना के निकलेगा। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू चेक एंड से। थैंक यू। तो even just before coming here कि he wants Nifty to settle around somewhere around 700 750। मैंने कहा ठीक है, तेरा लेवल तेरे को जरूर दिखेगा अभी just before coming here। तो वो व्हाट आई बिलीव कि देखो अभी भी विश्व वोलेटिलिटी इजंट ओवर इन द मार्केट। अब क्या है कि हम वोलेटिलिटी में जब बात कर रहे हैं तो हम इंडिया विक्स देख रहे हैं, बट व्हेन यू लुक एट द इंट्राडे मूव्स ऑफ द निफ्टी, दोज आर ह्यूमंगस। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो नीचे में वो 55,000, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो 55,500 से 56,000 के 133, मतलब ऑलमोस्ट 1% की उसने रिकवरी दी नीचे से। एंड उसके बाद वो दोबारा गिर रहा है, मतलब दोबारा से थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। तो व्हाट आई बिलीव कि दिस isn't over, it is going to continue for the entire day, and that's why what I'm asking कि yes, because the volatility is likely to be there, तो ऊपर के लिए तो आई एम प्रेटी श्योर कि हाँ, जब तक 850 या 870 ना निकले तब तक तो मैं फर्दर रिकवरी के लिए नहीं खेलूंगा। हाँ, नीचे में भी शायद अगर लो के पास भी आ रहा है ना, तो दैट इज अ वेरी डेंजरस साइन, वेरी वेरी डेंजरस साइन, राइट जय? उसके पहले ही रुक जाना चाहिए। मतलब 700 के लेवल पे हम देखे भी राज, तो अभी भी लगभग 3 करोड़ के आसपास है शेयर्स विशु एज ऑफ। हाँ, और नीचे भी आप देखो तो एडिशंस अच्छा हो गया है आज। इनफैक्ट नो वन वुड हैव इमेजिन्ड विशु येस्टरडे आफ्टर ट्रम्प ट्वीट और मे बी टुडे मॉर्निंग, बट वो होने के बाद है ना, यहाँ पे सुबह से राज आपने भी नोटिस किया रहेगा कि वो ऐड होते गया धीरे धीरे धीरे। और विशु आप देखो ना, मतलब ऑलमोस्ट 3 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ ऑलमोस्ट। तो ये एडिशंस अच्छा हो गया टिल 600, व्हिच इज दैट प्रीवियस लोस काइंड ऑफ अ थिंग। उसके आगे आप अगर कॉल में देखो ना तो अनवाइंडिंग अच्छा हो गया, और अब देखो कॉल में 1.5 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़। तो आप देखो ना पुट साइड पे ऐसा सपोर्ट तो बन गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है 700 ब्रेक करना आज डिफिकल्ट है। एंड 850 का जो लेवल हम लोग ने बात की फॉर अ वीकली क्लोज, क्या उसके ऊपर जाता है कि नहीं आज एक्सपायरी के दिन? तो मोटा मोटी एज ऑफ नाउ ये 150 पॉइंट की रेंज है आपकी, 700 और 850 की। I mean, I can say that for this expiry, today's expiry, 700 और 850. But even having that view for today, I would not recommend going short straddle or strangle friends because IV is नीचे। तो वैसा वो मत समझना कि ये 150 पॉइंट की रेंज है तो मैं तो 18 रुपया इधर, 20 रुपया इधर और 12 रुपया इधर, मतलब मुझे 30 रुपया मिल रहा है मैं ले लेता हूँ, वो मत करना। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, राइट? तो इसलिए हम लोग ने 7 अगस्त की एक्सपायरी की विशु हम लोग ने स्ट्रेटेजी जो है वो रेकमेंड करी है रेदर देन टुडे। सी आज के लिए अगर ऑनेस्टली अगर विशु में बताऊं आपको, आज के लिए कोई स्ट्रेटेजी अगर बैटरी अगर आपको ट्रेड करना ही है फॉर टुडे, ठीक है ना, तो लेट मी जस्ट चेक कि अगर आपने 19 रुपए पे लेके 13 रुपए पे लिए थे 850 की, तो आपका टोटल कॉस्टिंग हो गया 32 रुपए का। 32 के सामने आपने 650 का बेच दिया 10 रुपए पे, और 950 का बच दिया 17 रुपए में बेचा। तो आपकी 32 में से 17 रुपए गए हैं, तो आपकी कॉस्टिंग लगी 15 रुपए की। 15 के सामने आपको 35 मिलने के चांस है अगर ये 700 और 850 के लेवल अगर निकाल दिए तो। मतलब इफ यू आर थिंकिंग कि ये दोनों पार कर ही दे आज, तो कहीं ना कहीं हो ही जाए मूव, तो which also looks less likely. मेरे हिसाब से less नहीं, but if someone is a kind of guy want to do, we are not recommending only that. But if someone really wants to do, I think that makes more sense rather than going short in the low IV scenario. So that's called long iron condor, wherein you are buying 850 call, buying 700 put, and 50 points above and below, respectively, you are selling call and put also. तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 15 पॉइंट्स का। सीरियसली मूव आ गया ना 850 और 700 के नीचे, सी व्हाट वुड योर ब्रेक इवन वुड बी 865 अप एंड 685 डाउन, 15 रुपए का कॉस्ट है, तो ये आपका ब्रेक इवन। राइट राइट, एब्सोल्युटली। आई थिंक लास्ट वीक भी जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपकी लास्ट वीक की स्ट्रेटेजी वाज लॉन्ग आयरन कॉन्डोर फॉर द वीक,
जो अभी that which is the tail end for today, जो हम देख रहे हैं. Yes, that has worked well. Worked well. Right, absolutely. ठीक है, सेक्टर वाइज भी हम लोगों ने एक बार वैसे तो राज ने तो अपना व्यू दे दिया. जय, व्हाट डू यू थिंक? Yeah. So again, there too, I mean, I'm absolutely, I mean, in agreement with Raj. कि देखो, IT has a lot of shocks. Issue. Nasdaq has been going up, forming lifetime highs. In fact, Nasdaq futures also today is quite well, I mean, in positive territory. Obviously, because of the two major IT giants numbers like Meta and Microsoft, which has been quite positive. And see, so वो जो आईटी को लेकर नेगेटिव आउटलुक वहां का है, वो एज ऑफ नाउ इतना नहीं. एक एक करके डील हो रही है ग्लोबली. यूके के साथ हुई, ईयू के साथ हुई. ऑब्वियसली इट हैज टू गो थ्रू 26-27 पार्लियामेंट्स ऑफ ईयू. वो डील हो गई, मगर एक एक पार्लियामेंट में पास होते 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 शायद 2 महीने लग जाए इंप्लीमेंट होते, मगर वो हुई तो है डील. सो वो टैरिफ तो अटक गया उस पे. जापान के साथ हुई, तो मोरलेस कि सबके साथ धीरे धीरे हो जाएगी. तो वो जो अनसर्टनिटी थी, जो लिबरेशन डे वाली थी, वो लिबरेशन डे वाली अनसर्टनिटी तो निकल जाएगी उसके बाद मार्केट से, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. और उसके बाद शायद आपका ग्लोबल इकोनॉमी, एक जियोपॉलिटिकल टेंशन हट गया, ग्लोबल टेरिफ वॉर हट गया, तो फिर कुछ ज्यादा नेगेटिव ना बचे, तब जाके फिर शायद थोड़ा आईटी में क्लैरिटी आए आपके. नेस्डैक में तो प्रॉब्लम नहीं है हमारा, इसलिए था बिकॉज ऑफ कि वहां पे अगर डाउन ट्रेंड आता है तो शायद हमें ज्यादा काम मिले नहीं. अब वहां पे नहीं आ रहा तो हमें काम क्यों नहीं मिलेगा. और वहां पे शॉर्ट्स है, अगर यहाँ पे एज यू नो राजेश सिंह की अच्छा खासा शॉर्ट आईटी में है, तो इशू और इंडेक्स में भी है हमारे निफ्टी में. तो अगर शॉर्ट कवर करना है कहीं ना कहीं, तो फिर आपको जहाँ पे शॉर्ट हो वहीं पे कवर करोगे ना. तो थोड़ा बहुत आईटी में शॉर्ट कवरिंग क्यों नहीं आ सकता. ऐसा नहीं है ना कि नेस्डैक इज डाउन बाय 2000 पॉइंट्स एंड हम यहाँ पे आईटी के बाउंस भी करने की बात कर रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं है. तो शॉर्ट वहां पे है तो वहीं पे शॉर्ट कवरिंग आएगी, is what we expect. So that is one of the sector wherein there is a chance of a bounce back. HUL के numbers के बाद अगर आप देखो तो HUL पॉजिटिव है. FMCG so far has been doing reasonably okay. चाहे आप वो टाटा कंज्यूमर देख लो, धीरे धीरे नीचे आया फिर ऊपर ही है. डाबर देख लो, मैरी को देख लो, नॉट बैड. सो दैट इज वन कैन बाउंस बैक. फार्मा हैज बीन डूइंग गुड. फार्मा में मुझे नहीं लगता मेजर कोई नेगेटिव है डिस्पाइट दिस टेरिफ टॉक एंड ऑल. आई डोंट थिंक मच. एंड थोड़ा बहुत मुझे जो पेपर में पढ़ के बोलो, मीडिया में पढ़ के बोलो, ये भी थोड़ा समझ में आया कि सी काफी स्टॉकिंग भी हुआ रहता है ना. स्टॉकिंग इस हिसाब से कि भाई मुझे पता है कि अगर 2-3 महीने आगे अनसर्टनिटी है, जैसे हमको लगता है, आप अगर समझो आप बिजनेसमैन हो, इफ यू आर डीलिंग इन फार्मा, you are an importer of pharma goods or maybe any other commodity, so you might stock if you see that this might something might come. तो आप 2-3-4 महीने का स्टॉकिंग भी कर लो. तो क्या वो रीजन है कि फार्मा के नंबर इतने बेटर है? आई डोंट नो, आई हैव टू डीप डाइव. आई एम नॉट ए फंडामेंटल एक्सपर्ट इशू, बट अब 2-3-4 महीना तो ऐसी कमोडिटी तो है नहीं कि आप स्टॉक नहीं कर सकते. ऐसा पेरिशेबल कमोडिटी थोड़ी है, राइट? तो आपने कर लिया स्टॉक और बच गए आप. वो 1 क्वार्टर तो निकाल लिया आपने. तो आई डोंट सी दैट मच ऑफ इम्पैक्ट until that uncertainty is there because you can store it. तो reasonably we have been swing. I and Raj have been saying कि धीरे धीरे हमने सिंजिन पे भी बाई रिकमेंडेशन दिया था, हमारा अच्छा ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हुआ. टोरेंट फार्मा पे भी दिया था हमने. So we are in that positive outlook, you know, from a derivative desk regarding the Nifty Pharma, which has played out well. So Pharma, FMCG, IT, तो all three actually defensive में ही आते हैं, तो ये जगह पे है. So apart from BFSI, see BFSI medium long term हमारा positive है. Okay, so let me give you a clear thought. Long term we are positive. Short term there is some profit booking, you can say unwinding because of the margin impact also, right? So apart from BFSI, बाकी में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है इस सब में. ऑटो आई एम नॉट श्योर. ऑटो लुक्ड गुड. इनफैक्ट आई वाज डिस्कसिंग दैट विद राज अपफ्रंटली कि भाई ऑटो मुझे ऐसा लग रहा है शायद ब्रेकआउट आ जाए, मगर वो नहीं आया. फ्रैंकली मैं सोचा था आएगा, नहीं आया. That is one. So I thought it was at the cusp of giving a breakout. It did. So I'm not sure about only one thing, which is Nifty Auto. And
metals, I mean, नहीं समझ में आ रहा है. Auto and metals, to be honest, I would like to avoid these two sectors and rather focus on IT, FMCG, pharma on the long side for this bounce. And BFSI में अगर थोड़ा बहुत बाजार के साथ बाउंस तो आ ही जाएगा ऐसा है, बट नॉट श्योर ऑफ शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड. वो 57,000 के पहले नहीं आएगा. क्लैरिटी 57,000 on buy rate. So that's the sectoral outlook. Absolutely. ठीक है, तो let's move towards the closing of this session. Any final parting concluding advice that you'd like to leave our listeners with or viewers with? Raj में से. Raj, let's start with you then. So, see, when I just want to say one thing: if you are not clear, please stay out. And right now, even I am not clear. I am clear on one thing कि okay, still market में volatility बढ़नी है और there would be increase in volatility, market may dip further. But again, whether it will happen today or the next week or in the second week of August, so nobody can be sure about that. And right now, that is too uncertain considering जो भी globally जो चल रहा है. So बस when you are in doubt, stay out. So that's how I would like to say कि हाँ ठीक है, जरूरी नहीं है ट्रेड करना. There will be enough opportunities to trade. There will be enough opportunities to make profit. Find out the stocks. क्योंकि अभी जो मार्केट है इसमें हमने बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत अच्छे से करेक्शन देखे. निफ्टी में वो चीज देखने को नहीं मिली. अगर आप कैप स्मॉल कैप में वहां पे हमें बहुत अच्छे करेक्शन देखने को मिले. Even there are few stocks which, despite all this volatility, they are trading at 52-week high. We used to tell it about Bharti. Remember विशु कि जब वो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल था लेकिन भारती इज मेकिंग एंड wasn't able to, मतलब वो थोड़ा सा भी नहीं गिर रहा था. तो these are the signs कि हाँ भाई कौन सा स्टॉक आने वाले समय में might become a next outperformer of the market. So look at those names, couple of alcohol names or मतलब even in the pharma stocks, there are number of names which are able to sustain 52-week high despite all this volatility. So perhaps we might see next round of up move or outperformance coming from those names. Absolutely. Jay? Yeah. Well, I would say that yes, agreed on the part of Raj what he said that I mean so far we have seen that there has still not been a clear indication from the IVs that we are done as far as the volatility in indexes or indices is over or not. Once we get that clarity, probably you might get that sustained move. Till then, there is a risk. What? I don't know. Probably we don't know. See, when IVs will go up, issue because of what reason it will go up, I don't know. It might be that trade deal could be absolutely favorable and there is a huge short covering. And it can be that there can be still pause or maybe, still more of discussion because of which market is not clear. Hence, there can be volatility. So we don't know. Or maybe, it is not trade deal at all. It is something else. Difficult to say that. But yes, till if you look at the chart of Nifty also issue, ये देखो ना आप ये नीचे जाके ऊपर आके वापस नीचे आना के ऊपर जाना, till you don't get this clarity. I mean, it is better to not be over leverage in the market. That one point, not be over leverage right now in the market is the correct thing until there is a clarity in the market. And if you're not over leverage, if you're limited to certain amount of leverage, make sure that possibly if you can hedge it as well. I mean that will reduce your risk. If at all there is a rise in IVs, there will be absolutely a reduction in your risk. I mean your risk will be very much limited, I would say, if you have done so. So that is the best advice we can recommend at this point of time, apart from all the strategies intraday as well as positional which we have recommended. Absolutely. Well, that was it for this week. Thank you so much, Jay and Raj, for your insights. And thank you so much, everyone, for watching. We'll be back next week on Twitter Spaces, Wednesday, 9 p.m. and here on YouTube, 1 p.m. Of course, gentle reminder, this is a recorded session that we record just before
we premiere it somewhere around 11:45 to 12:15. So please do take this as a learning and educational section. Please do not blindly follow the trades we have discussed. This is more of a more to educate the masses about how strategies are made by analysts. Thanks again so much, everyone, for watching. We'll be back next week. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.